Hello my dear students, how are you all? A very good morning to all of you. Today we are going to start unit 6 of our English grammar book, that is verbs. Okay, so before starting verbs, I am giving you 2 minutes. What you have to do is just think of a few sentences in your mind, any sentences, ठीक है, कुछ भी कैसे भी just sentence बनाओ इंग्लिश में अपने माइंड में, ठीक है, and then I will tell you something new. Okay, so just pause this video for 2 minutes and then we'll start again. Okay, so what sentence did you think? Just write it down somewhere. Okay, written. So what you have to do now is just look at that sentence. कोई action word है उसमें? Is there a word which says something that the subject is doing? For example, you made a sentence, Ram is singing. Okay, so what is Ram doing? Ram is singing. So there's an action word, कुछ काम हो रहा है, subject कौन है? Ram. ठीक है, in the previous chapter, the sentence we have studied about subject and predicate. So in subject, you know what is a subject, right? Subject वो होता है जिसके बारे में बात की जाती है. So the person who जिसके बारे और प्रेडिकेट क्या होता है? प्रेडिकेट वो होता है जो सब्जेक्ट के बारे में जो भी कुछ बोला जाता है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, राम इज सिंगिंग, इसमें राम इज द सब्जेक्ट एंड इज सिंगिंग इज द प्रेडिकेट. ओके, सो इन दिस व्हाट आई वांट टू से इज, जो जब भी हम लोग कोई भी सेंटेंस बनाते हैं, सो वी हैव इट द सेंटेंस इन 2 पार्ट्स, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. ओके, तो जो प्रेडिकेट वाला पोर्शन होता है उसमें क्या होता है? इट इज व्हाट द सब्जेक्ट इज डूइंग और व्हाट इज बीइंग टोल्ड अबाउट द सब्जेक्ट, राइट? सो प्रेडिकेट में जो मेन पार्ट होता है प्रेडिकेट का, दैट इज अ वर्ब. ठीक है, अब वर्ब क्या होता है? जैसे कि मैंने पहले बताया, वर्ब्स आर डूइंग वर्ड्स. जो भी एक्शन होता है दैट इज द वर्ब. सो जैसा कि मैंने बताया, जो सबसे पहले हम लोग एक सेंटेंस में देखेंगे, उसके 2 पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. तो सब्जेक्ट इज द पर्सन और द थिंग दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, ठीक है, दैट इज रिफर्ड टू इन द सेंटेंस. ओके, दैट इज द सब्जेक्ट. एंड प्रेडिकेट इज व्हाट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट द सब्जेक्ट. सब्जेक्ट के बारे में जो बोला जा रहा है, दैट इज द प्रेडिकेट. ओके, नाउ इन अ प्रेडिकेट द मेन वर्ड इज द वर्ब. जो प्रेडिकेट में जो मेन वर्ड होता है, दैट इज द वर्ब. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, सीता सिंग्स ब्यूटिफुली. ठीक है, सीता इज द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस, सिंग्स इज द वर्ब. सिंग्स ब्यूटिफुली इज एंटायरली द प्रेडिकेट. सीता सब्जेक्ट है, सिंग्स ब्यूटिफुली प्रेडिकेट है, और इसमें सिंग्स जो है वो वर्ब है हमारा. ठीक है, तो जो काम हो रहा है इस सेंटेंस में, व्हाट इज द वर्क बीइंग डन? इट इज सिंगिंग. सो सिंगिंग इज द वर्ब. ओके, अब अगर सिंग्स को हम लोग हटा देते हैं, वी राइट सीता ब्यूटिफुली, तो कोई मीनिंग बन रही है सेंटेंस की? कोई सेंस है इस बात का? नहीं ना. तो जो वर्ब है हमारा सिंग्स, उससे ये सेंटेंस कंप्लीट हो रही है. सो इन एनी सेंटेंस अ वर्ब इज मस्ट. किसी भी सेंटेंस में वर्ब होना बहुत इंपॉर्टेंट है. बिना वर्ब के सेंटेंस जो है वो मीनिंगफुल नहीं होगी. ठीक है, now we will see that verbs perform different actions. It means that verbs जो है सेंटेंस में उनका फंक्शन जो है वो अलग अलग होता है. हर सेंटेंस में वर्ब का फंक्शन अलग होता है, वर्ब का काम अलग होता है. तो सबसे पहला है वर्ब्स शो एक्शन ऑफ सब्जेक्ट. ठीक है, तो वर्ब्स जो है वो सब्जेक्ट का एक्शन शो करते हैं कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है. ठीक है, शी ईट्स चॉकलेट केक. ठीक है, इसमें ईट्स क्या है? जो शी है वो क्या कर रही है? शी इज ईटिंग, शी ईट्स चॉकलेट केक. ठीक है, तो ईट्स जो है दैट इज द वर्ब हियर. तो शी का जो है वो एक्शन बता रहा है. कौन सा वर्ड? ईट्स. तो ईट्स जो है वो वर्ब है हमारा. द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज मार्क वेंट टू द मार्केट. ठीक है, तो अब इसमें मार्क क्या कर रहा है? कहाँ गया है? मार्केट गया है. ठीक है, तो कैसे पता चल रहा है हम लोग को मार्केट गया है? व्हाट इज मार्क डूइंग? क्या एक्शन हो रहा है सेंटेंस में? वेंट. टू गो समवेयर, गो का ही फॉर्म होता है ना, वेंट. सो वेंट जो है वो हमारा वर्ब है. द नेक्स्ट इज वर्ब्स शो पोजेशन. पोजेशन मीन्स किसी चीज़ की जो हमारा है, जो हम पोजेस करते हैं. ठीक है,
और किसी चीज का पोजेशन शो करने के 3 वर्ड्स होते हैं, हैज, हैव और हैड, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई से एन एलिफेंट हैज 4 लेग्स, ठीक है, तो एलिफेंट के कितने लेग्स हैं, एलिफेंट कितने लेग्स पोजेस करता है, 4, ठीक है। तो हैज जो है वो हमें बता रहा है, इट इज शोइंग पोजेशन, ठीक है। देन द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज आई हैव मेनी बुक्स। अब मेरे पास बहुत सारी बुक्स हैं, ये कौन सा वर्ड है जो पोजेशन शो कर रहा है, द वर्ड इज हैव, ठीक है। हैव से पता चल रहा है कि मेरे पास बहुत सारी बुक्स है, हैव वर्ड जो है वो पोजेशन शो कर रहा है कि मेरा है, ठीक है। शी हैड सम मनी, अब इसमें भी हैड जो है वो पोजेशन शो कर रहा है कि शी के पास मनी था, ठीक है, जो भी लड़की थी उसके पास मनी था। विच वर्ड इज शोइंग द पोजेशन, द वर्ड हैड, ठीक है। तो हैज, हैव एंड हैड दे आर द फॉर्म्स ऑफ द सेम वर्ड, ठीक है। हैज हम लोग यूज करते हैं सिंगुलर नाउन्स के साथ, ठीक है। हैव यूज करते हैं प्लूरल नाउन्स के साथ, एंड आई के साथ भी हैव यूज होता है, ये हम लोग सब लोग जानते हैं। आई के साथ हैव यूज होता है एंड प्लूरल नाउन्स के साथ हैव यूज होगा। और हैड जो है इट इज द पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है। जब हम लोग पास्ट टेंस में बात करते हैं तब हम लोग हैड यूज करते हैं। शी हैड सम मनी मीन्स उसके पास था, ठीक है। शी डज नॉट हैव, अभी नहीं है, बट शी हैड मीन्स उसके पास था। तो खैर जो पोजेशन इन सेंटेंसेस में जिन वर्ड से पोजेशन शो हो रहा है वो कौन से वर्ड्स हैं, पहले में है हैज, द सेकेंड सेंटेंस, इन द सेकेंड सेंटेंस इट इज हैव, एंड इन द थर्ड सेंटेंस इट इज हैड। नाउ नेक्स्ट इज वर्ब्स डिनोट बीइंग ऑल्सो। बीइंग मतलब क्या होता है, बीइंग में हम लोग टू बी वर्ब्स यूज करते हैं, ठीक है। टू बी वर्ब्स मतलब इज, एम, आर एटसेट्रा, ठीक है। टू बी मतलब क्या होता है कि जो सब्जेक्ट को बाकी के सेंटेंस से जोड़ा होता है, ठीक, सब्जेक्ट के बाद ही ये वाले वर्ब्स आते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल राहुल इज वेरी नॉटी, अब इसमें सब्जेक्ट क्या है, राहुल, राहुल के इंस्टेंट बाद कौन सा वर्ड है, इज, ठीक है। तो अब ये जो इज है ये शो कर रहा है दैट what the subject means Rahul is, Rahul क्या है, he is very naughty. The next sentence is गांधी जी वॉज अ पैट्रियोटिक लीडर। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है इस सेंटेंस में, गांधी जी, ठीक है। एंड गांधी जी के बारे में क्या बोल रहा है, व्हाट वाज गांधी जी, ही वॉज अ पैट्रियोटिक लीडर। सो वॉज इज द वर्ब हियर, ठीक है। वॉज इज द वर्ब दैट डिनोट्स द what गांधी जी was or what he was like, ठीक है। Then the third sentence is I am a student, ठीक है। तो I is the subject here and I के बारे में क्या बताया जा रहा है, that I जो है वो मतलब मैं जो हूँ एक स्टूडेंट हूँ, I am a student. So I is the subject and subject के just बाद ये verb आया है, that is am, ठीक है। तो these words which are just after the subject and they denote what the subject is like, subject क्या है, कैसा है, इन verbs को they are the verbs that denote somebody's being, मतलब वो जो है वो to be verbs के फॉर्म के होते हैं, ठीक है। और इन वर्ब्स को जो है हम लोग लिंकिंग वर्ब्स भी कहते हैं, क्योंकि ये वर्ब्स सब्जेक्ट को बाकी सेंटेंस से लिंक करते हैं। बाकी के एग्जाम्पल्स में देखिए स्टूडेंट्स, फॉर इंस्टेंस सी द वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल, शी ईट्स चॉकलेट केक, ठीक है। अब इसमें what the action is being performed that is referred to in the sentence, ठीक है, कि क्या एक्शन हो रहा है उसके बारे में बताया गया है। Then an elephant has 4 legs, ठीक है। तो एलिफेंट की पोजीशन के बारे में बताया गया है, ठीक है। लेकिन जो हमारा लास्ट फॉर्म है verbs that denote being also, उसमें जो है हमारा एग्जाम्पल है राहुल इज वेरी नॉटी। तो राहुल कैसा है, व्हाट राहुल इज लाइक, व्हाट द सब्जेक्ट इज लाइक, उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। और किसी में ये नहीं है, व्हेन आई से शी ईट्स चॉकलेट केक वी आर नॉट डिस्क्राइबिंग हर, व्हेन आई से many books then also I am not describing myself, I am not telling how the subject is, but when I say Rahul is very naughty I am describing the subject, I am telling about the subject, that how the subject is, ठीक है, what the subject is or what the subject is like. So I hope now you must have understood the forms, the different functions of the verb and their differences, all the three you must have understood. Okay, let's proceed.
ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वर्ब्स का, ठीक है। ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स पढ़ने के लिए पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि सब्जेक्ट क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। वर्ब तो हम जानते हैं वर्ब क्या होता है, ठीक है, लेकिन सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट एक सेंटेंस में पहचानना, उसको जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सो लेट अस सी दिस एग्जाम्पल, रुबीना इज़ ईटिंग पिज़्ज़ा, ठीक है। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है, which whom are we talking about in the sentence? Rubina. So Rubina is the subject, ठीक है। What is she doing? Rubina is eating pizza. तो is eating pizza is the predicate of the sentence, ठीक है। अब इसमें verb क्या है, क्या कर रही है रुबीना? What is she doing? She is eating. The action of eating is being performed. So eating is the verb. And when I ask the question, what is she eating? What is Rubina eating? The answer is pizza, ठीक है। We get the object that is pizza. इसलिए pizza जो है ये object है sentence का. When we raise the question what and whom regarding the verb, with reference to the verb, जब हम question put करते हैं what and whom, जो हमारा आंसर आता है वो होता है हमारा ऑब्जेक्ट सेंटेंस का, ठीक है। अब कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है। व्हेन वी रेज द क्वेश्चन व्हाट एंड whom, वी डू नॉट गेट एनी आंसर, ठीक है। Those sentences are called intransitive sentences. The sentences which do not have a direct object are called intransitive, and the sentences which have a direct object are called transitive verb, are called sentences of transitive verbs. For example, जैसे यहाँ पे जो सेंटेंस है हमारा रुबीना इज ईटिंग पिज्ज़ा, इस पे हमने क्वेश्चन पुट किया व्हाट इज रुबीना ईटिंग, वी गॉट द आंसर पिज्ज़ा। तो पिज्ज़ा हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, और हमने क्वेश्चन किस चीज़ पे किया, सब्जेक्ट को वर्ब से जोड़ के क्वेश्चन किया। ऐसे ही हमें व्हाट एंड whom का क्वेश्चन करना है। If we get an answer, then the answer that we get is the object, and if we do not get an answer, then the sentence, the verb that the sentence has is an intransitive verb, means उसमें जो है ऑब्जेक्ट उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। आई होप ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव में इतना समझ में आया होगा। लेट्स सी what is a transitive verb. Actions that have a direct object to receive that action, ठीक है, they are called transitive verbs. यहाँ पे actions होगा, action नहीं, ठीक है। तो actions that have a direct object to receive that action, अगर कोई काम हो रहा है, कोई ऐसा object है जिससे directly वो action receive हो रहा है, then it is a transitive verb, ठीक है। In simple terms, you have to question what and whom. If you get the answer, then it is a transitive verb. For example, let us see the sentence. The man loves his children. Loves होगा यहाँ पे। So let us put the question. Whom does the man love? So we get the direct answer, his children. The man loves his children. ठीक है, तो his children is the object here, love is the verb, and the man is the subject. Okay, understood? We have to put the question what and whom with reference to the verb. So in this sentence, the man loves his children, we raised the question whom does the man love, and we get the answer his children. That is why this is a transitive verb. Let us see some more sentence examples. The doctor cured him. Whom did the doctor cure? We are getting the answer him. Cured is the verb, and whom did the doctor cure? Him. We are getting the answer, right? Question put up किया whom, we are getting the answer. So this is a transitive verb. Cured is a transitive verb. She crossed the street. What did she cross? The street. Cross is the verb here. The street is the object. ठीक है, we raise the question what did she cross, we get the answer the street. So the street is the object. The third example is Rohan kicked the ball. Okay, so what did Rohan kick? Kicked is the verb, and what did Rohan kick? The ball, right? So we get an answer. That is why the ball is the object and kicked is the verb. So kicked is a transitive verb in this sentence. The next is what is an intransitive verb? Action that does not have a direct object to receive that action is called an intransitive verb. Verbs actions होते हैं, ठीक है। So verbs that do not have a direct object to receive that action, जो भी काम हो रहा है, जो भी action हो रहा है, वो directly किसी object पे receive नहीं हो रहा है, then we call it as intransitive verb. In short, जिस सेंटेंस में what and whom
के क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलेगा, दैट इज एन इंट्रांसिटिव वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, स्नो फेल येस्टरडे, ठीक है। सो हम यहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब के रिलेशन में क्वेश्चन पुट अप करेंगे, व्हाट एंड whom का। लेट अस सी इफ वी गेट एन आंसर। व्हाट डिड द स्नो फॉल? व्हाट डिड द स्नो फॉल? कोई आंसर? इट इज अ लेम क्वेश्चन। whom डिड द स्नो फॉल? ना, गलत क्वेश्चन, ठीक है। सो हमें व्हाट एंड whom का आंसर नहीं मिला। यहाँ पे हम लोग ये क्वेश्चन नहीं कर सकते कि व्हाट फेल येस्टरडे। वाई? बिकॉज हमें सब्जेक्ट एंड वर्ब दोनों से रिलेट करके क्वेश्चन पूछना है, सिर्फ वर्ब से नहीं। वी हैव टू रिलेट द सब्जेक्ट एंड द वर्ब बोथ। सो सब्जेक्ट इज स्नो, फेल इज वर्ब, दोनों के साथ क्वेश्चन कर रहे हैं जब हम लोग। व्हाट डिड द स्नो फॉल येस्टरडे? whom did the snow fall yesterday? तो इन क्वेश्चंस का कोई मतलब नहीं है एंड ना कोई आंसर आ रहा है, इसीलिए यहाँ पे फेल होगा हमारा इंट्रांसिटिव वर्ब। अंडरस्टूड? जहाँ पे what and whom का आंसर ना मिले विद रेफरेंस टू द सब्जेक्ट एंड द वर्ब, दैट इज इंट्रांसिटिव वर्ब। ओके, नाउ सी सम सेंटेंस एग्जांपल्स। We failed. Whom did we fail? What did we fail? Any answer? No. So this is an intransitive verb. Failed is an intransitive verb. She is sleeping. Whom is she sleeping? What is she sleeping? Are we getting an answer? No. So this is also an intransitive verb. That is, sleeping is an intransitive verb. Then the third example is they work hard. Whom do they work hard? What do they work hard? कोई आंसर मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। So work is an intransitive sentence here. I hope you have understood transitive and intransitive. Now we'll study the main parts of the verb. ठीक है, verb के 3 main parts होते हैं, that is the verb is either in the present tense or the verb is in the past tense or the verb is in the future tense. तो जो हम लोग tenses पढ़ते हैं वो किस चीज़ का tense होता है? verb का tense होता है, ठीक है। It is the tense of the verb. verb का time, tense मतलब time, verb का time बताते हैं हम लोग कि verb present में हो रहा है या past में हो चुका है या future में होगा। Okay, now we'll see the examples. He asks questions all the time. Okay, he asks questions all the time. So इसमें asks जो है वो हमारा verb है and it is in the present tense. Then he asked questions all the time means वो पूछता था. Here asked is the verb and it is in the past tense. Asked is the verb and it is in the past tense. Okay. The third sentence is he will ask questions all the time. Will ask मतलब ये future की बात हो रही है, ठीक है। Will ask is the verb and it is in the future tense. So when I say asks, it is in the present tense. When I say asked, it is in the past tense. And when I say will ask, it is in the future tense. Okay students, I hope you have understood this. जो tense होता है वो हमारा verb का tense होता है, present, past and future tense. The next is regular and irregular verbs. ठीक है, तो regular verbs वो होते हैं जिनका past tense जो है वो same kind का होता है, ठीक है। प्रेजेंट टेंस अलग होता है, पास्ट टेंस एंड पास्ट पार्टिसिपल जो है वो एक ही तरह का होता है, दे आर लाइक द सेम। आंसर्ड एंड आंसर्ड जनरली एंडिंग इन ईडी, ठीक है। रेगुलर वर्ब्स इन्हीं वर्ब्स को कहते हैं। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है स्टूडेंट्स? पास्ट पार्टिसिपल वो वर्ब्स होते हैं जो या तो ईडी या ईएन में एंड होते हैं, ठीक है। दे ईदर एंड इन ईडी और ईएन। So most verbs are regular, and what are regular verbs? Regular verbs are those verbs whose past and past participle forms are generally the same. They have an ending in ed. Okay, we can see a number of examples in this table. The present form is answered, the past form is answered, and the past participle form is answered again. The present form is asked, the past form is asked, and the past participle is asked again. Similarly, boil is the present form, boiled is the past, and boiled is also the past participle form. Okay, there are a number of verbs in this table. You can read them. Pause the video and read all of them. Okay. Now there are some verbs that do not follow these rules, जिसका past और past participle अलग होता है।
such verbs are called irregular verbs. Okay, जो regular verbs के rules follow नहीं करते हैं वो होते हैं हमारे irregular verbs. Okay, अब on the screen we can see a list which is of irregular verbs. Okay, there are numerous irregular verbs in here. The present form is alight, the past form is alit or alighted, and the past participle is also the same, alit or alighted. Then the next word is begin, the past form is began and the past participle is begun. Then the present is break, past is broke and the past participle is broken. Present is blow, past is blew and the past participle is blown. Okay, so pause this video and read aloud all these words, students. Other than these tables that are there in the video, there are a lot of verbs given in your book also of the regular and irregular verbs. Okay, so there are many tables drawn. You will also read those tables. Okay, now the next is strong verbs and weak verbs. अब strong and weak verbs क्या होते हैं? Strong verbs are those verbs which form their past tense by simply changing the vowel without adding ed or d or t are called strong verbs. Okay, so वो verbs जो present से past में change हो जाते हैं without adding ed or d or t, they are called strong verbs. बस बीच का उस जो basic verb होता है, जो present tense में verb होता है, उसका जो बीच का vowel है वो change हो जाता है. They are called strong verbs. And weak verbs वो verbs होते हैं जिनके present tense के बाद हमें ed या d या t लगाना पड़ता है. They are called weak verbs. Okay, examples of strong verbs are come, came, write, wrote, speak, spoke, forget, forgot, arise, arose, etc. And examples of weak verbs are walk, walked, want, wanted, spend, spent, hear, heard, have, had, etc. Okay, so along with this list, there is also a list of these verbs given in your book on page number 33. You will read those verbs also. Okay, you will read the tables aloud and then you will understand it even more clearly. Now students, there are some verbs that do not change their form. They are the same in the present tense, in the past tense and the past participle and the future tense. Okay, for example, the first word is bet. It is same in the past tense also and in the past participle, or when we use it in the future tense, there also. Cut, same in the past tense, cut, and same as in the past participles and form also, cut. Then put, cost, hurt, hurt. There are some more verbs like this. All are not given in the list. Another thing, students, is written in the note here. Read it out. An easy way to tell whether a particular verb is weak or is strong is if in the past tense of the verb there is a d or a t at the end which is not there in the present tense, the verb is weak. Now suppose you are given to pick out the weak verbs and the strong verbs. So how will you pick it out? If there is a d or a t at the end of the past tense of the verb, अगर verb के past tense के last में d या t है जो कि verb के present tense के last में नहीं है, the word does not end with a d or a t but it is there in the past tense of the verb, verb का past tense करेंगे उसमें d या t आता है, then the verb is weak. तब वो verb जो है वो weak verb होगा. ठीक है, for example, laugh. There's no d or t at the end, but when we change into past tense, it becomes laughed. There's a d at the end, so it is a weak verb. But when we say rise and we change it into past tense, it becomes rose. Okay, so there's no d or t either in the past tense or in the present tense, so it is a strong verb. The next is auxiliary verbs or helping verbs. Look at the following examples, students. Martha is studying in her room. Okay, so what is the main verb here? The actual word, what is the action being performed? Studying. Okay, so it is the main verb. ठीक है, लेकिन main verb के साथ एक ऐसा verb है जो
मेन वर्ब को सपोर्ट कर रहा है, विच इज हेल्पिंग द मेन वर्ब. इट इज और इज जो है वो हेल्पिंग वर्ब है. ठीक है. इन द नेक्स्ट सेंटेंस, grandfather was praying in his room. So the main verb here is praying. The action being performed is praying. Okay. But along with the main verb, there's a verb that is helping the main verb, that is supporting the main verb to form the complete sense of the sentence. That is was, and that is the helping verb. Now next sentence is, I am enjoying a beautiful scene at the seashore. The main verb here is enjoying. Okay. And what is the verb that is supporting the main verb enjoying? It is am, to make a complete sense. So here, to form the complete sense, am is used and it is the helping verb in the sentence. I hope it's clear. The next example is, many seagulls are flying over the sea. Here the main verb is flying. Okay. Many seagulls are flying over the sea. Flying is the main verb, and the supporting verb or the helping verb, which we also call the auxiliary verb, it is are. Okay. जो sentence को support कर रहा है. ठीक है. It is helping the sentence to become a complete sense. So the action being performed is flying, and the helping verb in this sentence is are. Okay. Many seagulls are flying over the sea. The next sentence is, a little while ago a few children were playing on the beach. So in this sentence the main verb is playing. Okay. Playing जो है वो main verb है, and the helping verb or the auxiliary verb is were. ठीक है. जो verb main verb को help कर रहा है, it is were. Okay children. The next is, a hatchling is coming out of its egg. So the main verb is coming, and the helping verb in this sentence is. ठीक है. जो helping verb है sentence का वो है is, and main verb is coming. Coming main verb and is the helping verb. Next example is, I have asked him to come to shoot pictures. So here the main verb is asked and the helping verb is have. ठीक है. मेन वर्ब asked है और हेल्पिंग वर्ब have है. ठीक है स्टूडेंट्स. So we have these three principal auxiliary verbs, that is be, have and do, and in all these sentences we have studied their forms, that is in the present tense, in the past tense और in the past participle tense. ठीक है. तो इन तीन फॉर्म्स में हमने auxiliary verbs पढ़े. The next is formation of verbs. ठीक है. तो we'll study कि the formation of verbs and how certain verbs are formed from nouns, from adjectives, and by adding suffixes and prefixes to them. For example, from nouns, the word bath will become bathe, breathe will become breathe, and food will become feed. For example, if I say she took a bath yesterday. ठीक है. तो इसमें जो verb है, कौन सा word verb है? It is took. She took a bath yesterday. See another sentence. She heated some water to bathe before bed. ठीक है. मतलब उसने पानी गरम किया to take a bath to bathe before bed. ठीक है. तो here the word bathe is a verb. So we saw that how the noun changed into a verb. The next is adjectives changing to verbs. ठीक है. Able is the adjective and enable is the verb. Let us see some sentence examples. She is an able manager. ठीक है. तो here she is the manager and able is describing her quality. That is why it is an adjective. But when I say the bird's wings enable it to fly, तो यहाँ पे जो birds की wings हैं वो birds को fly करने में help करती हैं. They enable it to fly. So the verb here is enable. So the adjective changed to a verb. So now we'll see that how adding some prefixes can change words into verbs. Prefix मतलब word के पहले कुछ लगा देना. ठीक है. For example, able. Able के पहले अगर हम n लगा दें तो वो बन जाता है enable. ठीक है. And that becomes a verb. Lighten के पहले अगर हम n लगा दें तो it becomes enlighten and hence it becomes a verb. Little के आगे be लगा दें तो it becomes belittle.
and hence becomes a verb. Similarly, friend के आगे अगर हम be लगा दें, it becomes befriend and it becomes a verb. सफिक्स क्या होता है कि जो वर्ड होता है उसके बाद में हम कोई वर्ड लगाते हैं, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, ब्रॉड के बाद अगर हम en लगा देते हैं, ब्रॉडन बन जाता है एंड ब्रॉडन इज अ वर्ब. लूज के बाद अगर हम en लगा देते हैं तो वो लूजन बन जाता है एंड इट इज अ वर्ब. सिमिलरली, अपॉलोजी में अगर हम y हटा के ise लगा दें, सो इट बिकम्स अपोलोजाइज एंड इट बिकम्स अ वर्ब. क्रिटिक के आगे अगर हम ise लगा दें, इट बिकम्स क्रिटिसाइज एंड इट बिकम्स अ वर्ब. क्रिटिसाइज मतलब होता है किसी चीज़ की बुराई करना, उसके बारे में क्रिटिकली बताना कि वो कितना अच्छा है या कितना बुरा है, या उसमें क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या बैड क्वालिटीज़ हैं, ठीक है. ये सारी चीज़ें, दैट इज़ कॉल्ड क्रिटिसिज्म. ओके. देन टेरर. टेरर के बाद टेरर में OR हटा के अगर हम IFY लगा दें, सो इट बिकम्स टेरिफाई, अ वर्ब. सिमिलरली, जस्ट के बाद अगर हम IFY लगा दें, इट बिकम्स जस्टिफाई, अ वर्ब. प्योर के बाद अगर हम E हटा के IFY लगा दें, इट बिकम्स प्योरीफाई, इट इज़ अ वर्ब अगेन. सो दीज आर द वर्ड्स आफ्टर विच prefixes and suffixes are put and these words become verbs. ठीक है. So I hope you all have understood this chapter. This was the last part of the chapter. Okay, so we have studied many things in this chapter. See this video once or twice to understand it clearly. Read the examples that I have given in the video that are there in the book. I hope you all will understand it better and it will become easier for you. Thank you, children. Have a good day.